Alright, a different look today, but those of you who don't know, I'm scaling an agency and I'm going from $0 to $120,000, or you can say I'm going from 0 rupees to 1 CR. And this is day 3 of my journey. So basically, today we are going to talk about setting up appointment booking channels and we are going to talk about email campaign specifically. So मैं आपको इस पूरी वीडियो में वो सिखाऊंगा कि आप अपना खुद का एक ईमेल कैंपेन कैसे बना सकते हैं इन फुल डिटेल विद नो गेट कीपिंग ऑफ कोर्स. लेकिन उसके साथ मैं ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग माई अपडेट्स एज वेल. इफ़ आई टॉक अबाउट अपडेट्स टुडे, it is 4:55 if you can see it. I mean, yeah, probably you can. तो 4:55 right now सुबह के, and today is 4th of April. लेकिन ये पूरी वीडियो is of 3rd, तो I did not upload it on 3rd क्योंकि एक दो चीज़ें करनी बची थी. तो I'm going to do this on the 4th. and मैं अभी बस एक 40 minute run करके I just came back. Now I'm going to record like this intro and everything. मैं कल की वीडियोस पेस्ट करूँगा and I'll upload this. So we had 1 2 3 4 5 calls yesterday, जिनमें से 4 show up थे, and one basically got rescheduled. And alongside this, I closed one of the clients for 75,000 plus GST for my system setup thing, and along with it, of course, the retainers. So I will be adding that to the updated balance. I'll also show you a part where they're saying send us the GST and we'll start working right away. So that's basically what I wanted to share. Now, there's a power cut. Wow. Well, there's a power cut, but the thing is, so this is already done. Now I'll be sharing the video on how do you set the appointment booking channels, and there's not much to share other than this, right? I've already shown you how we are getting a good show up rate. मैं अपने closed client वाले वीडियो का छोटा सा पार्ट डाल दूंगा, and yeah, that's probably it, right? So if you have anything to share, if you have anything to ask, please make sure that you ask it from me in the comments. And if you like what I'm doing, please hit the like button and subscribe the channel for more such videos. Bye bye. Because I have got so many calls. The price is 75,000 rupees as a one-time consulting fee for 180 days, 6 more months. For 6 more months. Okay. Yeah. Fine. Right. Sounds good. I'm definitely interested. But Got so it. how do we discuss payment details? Yeah, so you have a GST number and everything, right? I have a GST. I'm operating under my wife's GST number. Got it. So she's also. I mean, we're doing this together, but it's mostly 90% is with me. So I'll be using her GST. Got it. For this. So I'll call Gurman right after this. He takes care of GST and everything. I'll Mhm. call him. He would raise you a GST bill. All right. Hi everyone. So अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? We are going to set up an email campaign फॉर आर्सेस. तो ये मैं अपने को फाउंडर के लिए कर रहा हूँ ताकि उनको भी मीटिंग्स आएँ एंड ही कैन ऑल्सो टेक ऑन सेल्स कॉल्स. बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू इट. तो वट वी आर यूजिंग फॉर दिस वुड बी इंस्टेंटली. इसके साथ में मैं सेंडस्पार्क का यूज़ करूँगा इन ऑर्डर टू ऑटोमेट द होल लिंक्डइन, नॉट लिंक्डइन, ऑटोमेट द होल वीडियो प्रोसेस. लेकिन आप लोग मतलब अगर नॉर्मल बिना लूम वाला कैंपेन चलाना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल. सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू वुड बी Gurman campaign. I'm just going to name this Gurman 3 April. I'm going to continue with this. यहाँ पे लीड्स डालनी है. These are some leads which I already extracted from Traction. तो लीड्स के लिए यू कैन यूज़ अपोलो. आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जब आप इसका लिंक मेरा लिंक यूज़ करोगे तो आपको 5 क्रेडिट्स फ्री में भी मिलेंगे. इसका यूज़ करके आप अपोलो, सेल्स नेविगेटर, क्रंचबेस जैसी जगहों से लीड्स निकाल सकते हो फॉर अ वेरी चीप कॉस्ट. सो फॉर एग्जांपल आप फ्री अपोलो अकाउंट बनाओ. तो लेट्स से मेरे पास अपोलो लॉगिन नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ. आपने फ्री अपोलो अकाउंट बनाया, उस पर आपने फ़िल्टर्स वगैरह लगाए, लेकिन फिर आप देख नहीं सकते हो सारी ईमेल्स वगैरह, राइट. लेकिन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. आप वो जो ऊपर लिंक आ रहा होगा अपोलो का, उसको Ctrl+C किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया. इसका कुछ भी आप नाम रख दो, टेस्ट. कितने कॉन्टैक्ट्स चाहिए? लेट्स से आपको 3,000 कॉन्टैक्ट्स चाहिए पूरे महीने के लिए. किया, डोंट वेरीफाई, $3. यानी कि आपको तो 5 फ्री में मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक से करोगे. तो आप अगर सिर्फ 3 फ्री में भी करोगे तो आपको 3,000 ईमेल्स मिल जाएंगे ऑलरेडी.
तो आप अपोलो का यूज़ करके अपने लीड्स निकाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने ट्रैक्शन से निकाले हैं। कांट यूज़ ट्रैक्शन विद बूमरैंग, एंड ट्रैक्शन आप वैसे भी शायद नहीं यूज़ कर पाओगे, इट कॉस्ट्स लाइक 12 लाख रुपीज़ अ ईयर। तो anyways, I'm pretty sure a lot of you won't be able to get access to that, लेकिन this is basically what we have। अब हम इसको सेटअप करेंगे तो इसमें से मैं फालतू की चीज़ें हटा दूंगा, लाइक टाइटल की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिटी, स्टेट, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, डिपार्टमेंट, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कंट्रोल, डिलीट सेलेक्टेड कॉलम्स, वेबसाइट चाहिए, अकाउंट लिंक्डइन इज़ कंपनी लिंक्डइन एंड कॉन्टैक्ट लिंक्डइन इज़ पर्सनल लिंक्डइन। कंपनी लिंक्डइन मुझे नहीं चाहिए, फेसबुक नहीं चाहिए, ट्विटर नहीं चाहिए, फ़ोन नंबर भी आई डोंट नीड इट, फाउंडेड ईयर, इंडस्ट्री नहीं चाहिए, कीवर्ड्स नहीं चाहिए, एम्प्लॉयज़ नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस, एड्रेसेस भी आई डोंट नीड देम, आई वुड सिंपली डिलीट। शायद से मैंने ऑर्गेनाइजेशन नेम डिलीट कर दिया एंड दैट वाज रॉन्ग, तो मुझे वो नहीं करना था। लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन नेम कहाँ पे है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन नेम नहीं डिलीट करना था, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम है ना। आई डोंट हैव टू डिलीट दिस, मैं बाकी सब डिलीट कर सकता हूँ, राइट। या आई एम गोइंग टू सिंपली डिलीट। ऑर्गेनाइजेशन नेम है अब अकाउंट लिंक्डइन से लेके अब शायद सब कुछ डिलीट कर सकता हूँ, राइट। would simply select these and I would delete columns. So we have their website, organization name, LinkedIn account, email ID, full name, last name, first name. I'm simply going to download this as a CSV, and after this downloaded I am simply going to use millions verifier to verify these leads. It's important कि आप leads verify करो, अगर आपका bounce rate ज़्यादा आता है तो आप स्पैम में जाने लग जाओगे एंड कोई मतलब भी नहीं है। आई एम सिंपली गोइंग टू सेलेक्ट दिस फाइल, आई एम गोइंग टू गो टू डाउनलोड, आई एम सिंपली गोइंग टू अपलोड दिस, राइट। एंड ये अपलोड हो जाएगी, तब तक वी कैन रिमूव दिस। और 4344 इज़ व्हाट वी गॉट। लेट्स स्टार्ट द वेरिफिकेशन। ये थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा। वंस इज़ वेरीफाइड वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इन द मीन टाइम हम लोग इंस्टेंटली पे कैंपेन रेडी कर सकते हैं। सो वी वुड गो टू सीक्वेंसेस। मेरे पास इसकी ऑलरेडी ईमेल की स्क्रिप्ट है जो मुझे यूज़ करनी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। आई एम सिंपली गोइंग टू गो इनटू सीक्वेंसेस, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, कंट्रोल शिफ्ट वी, video, and here I'm going to add in more of it। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बन गया। हाई फर्स्ट नेम, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, you have an impressive professional journey, we believe we can help your LinkedIn profile reflect that my team and I have taken a look at your business. We are confident we can help you create a commanding LinkedIn profile, organically gets you 30 to 90 pre-qualified leads, 4,000 to 5,000 followers on a LinkedIn profile in less than 180 days. And the best part is, if we don't deliver you on leads, you don't pay. We work on a 100% pay on result basis. By the way, this is not an automated message. Recorded this video. We have already helped 10 founders generate 20 lakhs a month, sometimes getting them to 50 lakhs in a month. I would love the opportunity to learn more about your business challenges and goals. Receive this of it. When I say pay on result, I really mean it. Thanks. So that's basically what we need. Subject line, I would simply use question for, and I would add in first name. तो मैं यहीं से ऐड कर देता हूँ। We have added this millions verifier, अभी भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है in order to verify this, तो let's just wait, and in the meantime हम SendSpark खोल लेते हैं because we will be using SendSpark in order to record those videos, right? अभी मुझे SendSpark पे वो वीडियोज़ भी अपलोड करनी पड़ेंगी, तो लेट मी जस्ट गेट देम एज वेल। ओके, सो आई हैव गॉट द वीडियोज़, अब मैं उनको अपलोड कर दूँगा एंड इन द मीन टाइम ये भी हो गया, तो वी वुड फुल रिपोर्ट डाउनलोड। इसमें ऑलमोस्ट 1000 गंदे निकले हैं लीड्स एंड 3370 सही निकले हैं दैट वी कैन रीच आउट टू, तो वी कैन स्टार्ट यूजिंग देम। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे नॉट रिकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे सीधा अपलोड कर दूँगा जो दोनों वीडियोज़ मैंने डाउनलोड किए हैं। एक एक करके डालनी होंगी, डायनामिक पहले, एंड वी कैन अपलोड द सेकेंड वन थोड़ी देर बाद। तब तक ये डाउनलोड हो गया, तो अभी वी वुड हैव टू ओपन इट अगेन
in a different sheet and इसमें से हम सिर्फ अच्छे वाले leads रखेंगे. तो I'm simply going to go here, import, I'm going to upload, browse, and ये जो मैंने अभी भी डाउनलोड किया I'm going to import this here. एंड इन द मीन टाइम ये अपलोड हो गई है. मैं इस पर दूसरी भी अपलोड कर लेता हूँ वीडियो. दिस आर डायनेमिक के बाद स्टैटिक वीडियो. ओके एंड यहाँ पे अपलोड हो गई. इंपोर्ट डेटा. ठीक है. यस डन. फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पे जाके अच्छा जितने भी बैड और वो हैं उनको हम हटा देते हैं. तो we are simply going to add in a filter here. Quality we are going to only remove good. इन सबको मैं remove कर दूंगा. And I would simply right click, delete selected rows. And I think we only have the good ones now. मैंने गलती से ऊपर वाली रो भी डिलीट कर दी. तो आई कैन जस्ट इंसर्ट वन रो अबव एंड आई थिंक फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम ईमेल स्टेटस ये सब वैसे भी डिलीट ही कर देना है. तो आई एम सिंपली गोइंग टू delete column E and H. Yes, and these are the only good ones. यहाँ पे LinkedIn, यहाँ पे company and यहाँ पे website. Now once this is done, we are simply going to check. मतलब ये तो ठीक है ना. हाँ अब I just need to see कि कितने emails हैं. So we have 3,371 emails and we are simply going to name this Goodman Leads April 1, not 1-3, and we are simply going to download this as a CSV again. अब यहाँ पे दोनों हो गई हैं. I just need to attach them. तो मैं इसको खोलूँगा. I would add a video here. I would add in a static video. I would select it. मैं एक बार इसको play करके देखूँगा. Okay, I think I can make this even better. So I would do that and then I'd get back to you, right? Okay, so I made some changes in the video. The video is ready now. So I'm simply going to use this. उसके लिए first of all I would need a template. I would click on create a template. Here the template name would be Gurman and header would be video for first name. I hope there's a space. Message नहीं होगा. Call to action होगा. Book and appointment. यहाँ पे Calendly का link. Save and यहाँ पे header में I think I need to add in a space. ये यहाँ पे हाँ ठीक है. Calendar embed. Provider would be Calendly. Link यहाँ पे save. So this is basically done and we can close this now. Now we would go to dynamic videos. We would create a dynamic video. We would call this Gurman April 3. We are going to turn off name personalization. I'm simply going to browse dynamic, select video, background on, fallback pay. I'm going to add in chapter2.pro. I'm going to save it. Simulate scrolling. ठीक है. We're going to click on continue. We're going to select our template. यहाँ पे template select हो गई है. Then we are going to click on we're simply going to click on continue. यहाँ पे we are going to upload our list. So this is the list. First name would be first name. Email would be email. Company name would be company name. Background URL would be website. LinkedIn URL we don't need it. तो बस ये हमने डाल दिए. Let's wait for this to get imported. Actually, you know what? I don't need all of these. So I think it's better if I just do it for like 2,000 and I leave the rest.
so I can maybe delete the remaining ones. Just 1 second. Select delete rows, file, download CSV, Ctrl-Z. I would simply delete all of these. Let's wait for it to refresh. Oh, okay, now we will upload this again. Upload, open. First name, email would be email, company name, job title, background URL would be website. That's it. Import and map data. इस बार सिर्फ 2000 होंगे. We are going to start creating the videos. We are going to attach them to instantly and we are good to go. Okay, 2000 contacts हैं. We are going to click on generate. We're just going to generate 3. So start with 3 videos. Abhi, in the meantime, I will simply add in more steps here. Hey, first name, did you get a chance to check my video? और इसके बाद में any thoughts on the video? Figured it got buried and we are going to add in video here. And step 4 on any thoughts on the video I sent. So this is done. अभी इसको 2 दिन and yeah, not 2, 3. So 2, 2, 3. That's what we probably have, right? 2, 2, 3. Yeah. So this is done. We are going to save this. I think the videos are probably done as well. Let's just play one of these. So tatads.com. Let's see what it looks like here. So video message by SendSpark is what we need to remove. यहाँ से SendSpark का link is what we need to remove, and this is what we need to remove. Then I'm simply going to close them, and I am going to go into my settings. So I would do that. ये यहाँ पे हो गया. I'm going to schedule. यहाँ पे I need India, so that would be New Delhi, and 9 AM to 6 PM is fine. Monday to Friday. I can add in Saturday as well. Save. Options में I will add in the email IDs that I have, so that's something I'll have to open without showing it to you guys क्योंकि वहाँ पे passwords हैं. तो just give me a second. Alright, so I've done 2 things. एक तो मैंने वो SendSpark की पूरी branding हटा दिया है except for the link, तो वो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ. I think sendspark.com is fine. तो अभी there's no SendSpark thing here. So that's good. And alongside this मैंने यहाँ पे सारे 20 email IDs डाल दिए हैं. So daily limit would be 600 and the max we can send a day would be 100. लेकिन I am thinking of making this 150 for us. So I'm going to add in max new leads 150 limit. Random time 10 minutes and random additional time 3 minutes. I think rest everything is good. 115 to 4 is 600. So that's good enough. I can turn this on. Enable company reply, stop on auto reply, and I think stop sending emails and replies on enable, right? Rest everything's good to go, so I can save this. Now all I need to do is I need to create the pending videos. So I'm simply going to generate these. I need to download it, upload the CSV, and we can start using it. So let me just do this, then I'll get back to you. So actually I just came back yesterday, तो मैं अगले दिन record कर रहा हूँ, and we had some problem where I added like 2000, so I added the remaining leads there, and as soon as I did it, all my videos were gone. I lost my credits and things like that. So for now, just to explain to you how exactly this works, I will just take an example of a different dynamic campaign. Once this is done, I will be using this. Let's just see once again for sake if this is complete. No, all the contacts have been added here, but all the ones I generated got removed. So anyways, we will use a different campaign. Let's say we use this one for now, right?
So here's how we use it. Okay, no video here. Let's just try with this one. Probably, yeah, we have created videos here, right? So I'll simply download this as a CSV. I'll log in my instantly in the meantime. तो ये CSV डाउनलोड हो गई है. I would log into instantly, and now I would I would go to my campaigns. I would go to this campaign, I would go to leads, I would click on add leads, I would upload CSV, upload the CSV I just downloaded. Contact name would be first name, email, company name, anything else we don't need to add it. Check duplicates, not for now. Upload, right? And then we click on share campaign, we find instantly here. So I click on copy here, remove this video with this. Let's just wait for a second. Let's do this, do it like this, and as you can see, it's working, right? So that's basically how you use it. Now the thing is that I won't be like publishing it right now, and that's because ये मेरी video नहीं है. That's not what I want to send. So once my video and everything's complete, that is when I will be using like the video and I'll be uploading that, right? So for now, this is how you do it. That's how you set up an email campaign. Thank you so much.